वेलकम टू AGPG स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.sc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सो लेट स्टार्ट इट। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। जनरल स्टेटस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया। सॉइल डिग्रेडेशन मीन्स होता है लेसन या रिड्यूस, इन मिट्टी का कम होना। Soil degradation in the India is estimated to be occurring on 147 million hectares of land, which include 94 million hectare from water resource, 16 million hectare from acidification, 9 million hectare from wind erosion, and 6 million hectare from salinity, 14 million hectare from flooding, 7 million hectare from a combination of factors. So these are the causes of soil degradation, which include both natural and human. Natural causes include earthquakes, tsunami, drought, avalanches, landslides, volcanic floods, and human include land cleaning, deforestation, and inappropriate agriculture practices. Proper management of industrial effluents. Industrial effluents means uh, solid and liquid waste released by the industries, and overgrazing, careless management of forest, सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कि हम माइनिंग करने के लिए ट्रीज और प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं। जहाँ पे माइनिंग करते हैं उस पूरे एरिया में जितने भी ट्रीज और प्लांट्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन it's turned led to soil erosion and destruction of agricultural land, and this also destroy the landscape, forests, and wildlife habitats. And urban sprawl. Urban sprawl means spreading of urban developments such as houses, dense multi-family apparatus, office buildings, and office centers. And industrial development और कुछ social causes and soil degradation के like land shortage, decline per capita, land availability, economic pressure on land financing, poverty, population increase. सॉइल इरोजन का बहुत लॉस हो रहा है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि सॉइल प्लेस टू अनदर प्लेस दस कॉजिंग, इसीलिए डेप्लीशन न्यूट्रिएंट की भी कमी हो रही है. एंड सेकेंड पॉइंट, बिसाइड द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द टॉप सॉइल, थर्ड देयर इज ऑल्सो डिग्रेडेशन थ्रू द क्रिएशन ऑफ गलीज. डिग्रेडेशन की वजह से गलीज का क्रिएशन हो जाता है. And fourth point, water causes sheet wash, surface gullies, tunnels, and covers bank in rivers. Hot and dry climate of India, wind blowing in the main wind blowing is the main cause of soil erosion. Indian government is adopting measures to reduce Indian government कुछ unpleasant effects कर रही है to reduce the soil erosion in India. Then soil and water conservation is adopting adequate measures. कुछ एडिक्वल मेजर्स अडॉप्ट कर रहा है जिससे कि हम सॉइल इरोजन को हम रिड्यूस कर सकें, जिससे कि हम इंडिया में सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकें. ड्रॉट, फैमिलीज एंड फ्लड्स कॉज क्रॉप डैमेज. डेज ऑफ इंडिपेंडेंस. While general problems of soil erosion were known, answers to them, backed by scientific investigation, were not known. Consequently, during the farming of the first year plan and early in the second 5-year plan, a chain of a soil. After that, broad objectives of these centers are first, to identify erosion problems and conservation of land and water sources under different land use systems. इसमें क्या इन्वॉल्व है? मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व है जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं
different land use system, uh, to involve methods of soil control of soil and reclamation of ravines, establishment of लैंडस्लाइड हिल टोरेंट्स, मतलब जो इस्टेब्लिश करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हम उन रेवाइंस, मतलब उन गड्ढों को हम रिक्लेम कर पाए, तो दोबारा से उनको भर पाए, इस टाइप के हम मेथड यूज करते हैं। तो सॉइल इरोजन टू इवेल्युएट हाइड्रोलॉजिकल बिहेवियर टेक्निक ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट अंडर डिफरेंट सिस्टम्स, important soil and water conservation program implemented by government. These are soil conservation in catchments by river valley project RVP, integrated watershed management in the catchments of flood prone rivers FPR. Again, integrated watershed management in the catchments of flood prone areas, operational research projects on integrated watershed management, World Bank project on watershed development in rain-fed area, NABARD Holistic Watershed Development Program, Vasundhara Watershed Development Project. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.